Good morning, learners. Today we will discuss a new topic that is on comparing regimes. Here we will discuss the authoritarian and democratic regimes. Is there any differences between these two regimes? So before going to start our discussion on the main topic, we have to understand what the term authoritarian regime and democratic regime implies. So authoritarian regime is a type of political system where power is concentrated in the hands of a single leader or a small group. Authoritarianism क्या है? Authoritarian regime ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो पावर एक लीडर और एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में होते हैं. There are various types of authoritarian regimes like absolute monarchies, military dictatorship, one-party states, and personalist dictatorship. A single hereditary ruler holds supreme power in absolute monarchies. Absolute monarchy में क्या होता है? एक single hereditary ruler supreme power होल्ड करते हैं. मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है? वहां पे मिलिट्री के लीडर नहीं तो जो मिलिट्री के लीडर्स कलेक्टिवली डोमिनेट करते हैं द scenario of the state. Then one-party states. A single party controls the government and suppresses the opposition in one-party states and often with a particular ideology. During election, they often control or manipulate voters in their favor. one-party state में एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और जो अपोजिशन है उसको भी सप्रेस करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पार्टिकुलर आइडियोलॉजी. और इलेक्शन के टाइम पे वो लोग वोटर्स को मैनिपुलेट करते हैं और नहीं तो कंट्रोल करते हैं वोट देने के लिए इन देयर फेवर. Then another form of authoritarianism is personalist dictator. So here, a single charismatic leader dominates the political landscape with the help of his or her personality. Personalist dictatorship में एक लीडर उसके जो charisma है, personality है, उसके थ्रू political जो landscape है वो dominate करते हैं. Then democratic regime क्या है? So democratic regime is a form of government where individuals acquire the power to elect their leaders through free and fair elections. Democratic regime government का वो फॉर्म है जहाँ पे individuals के हाथ में ही पावर होता है to elect their leaders with the help of free and fair elections. So there are basically two types of democracy, direct and representative democracy. In direct democracy, citizens directly participate in decision-making process. This can involve voting on laws, policies, and other important matters through referendums or initiatives. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे थ्रू वेरियस मीन्स लाइक इनिशिएटिव हो सकता है, रेफरेंडम एक्सेट्रा. Then another form of democratic regime is representative democracy or indirect democracy. So here, citizens elect representatives to make decisions on their behalf in a legislature or other governing body. ये जो representative democracy है, यहाँ पे citizens directly participate नहीं करते decision making process पे. वो लोग through their representatives decision making process पे participate करते हैं. और ये जो representative democracy है उसका भी दो टाइप है. One is parliamentary democracy and another one is presidential democracy. In a parliamentary democracy, the executive derives its legitimacy from and is accountable to the legislature. The head of the government is chosen from the majority party in the legislature. Parliamentary democracy में जो executive है, executive legislature के प्रति accountable होता है और जो head of the government है वो मेजोरिटी पार्टी से ही चूज किया जाता है. And another form is presidential democracy. It is a system of government where a head of the state is the head of the executive branch and is directly elected by the people or by an electoral college. Presidential democracy क्या है? Presidential democracy में जो head of the state है वो ही head of the executive branch भी होता है और वो डायरेक्टली थ्रू बाय द पीपल इलेक्ट होता है और बाय इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट किया जाता है.
Then coming towards our main topic of discussion is a comparison between the democratic and authoritarian regimes. So first difference we can see in relation to power structure. In case of authoritarian regime, power is in the hands of a small elite group. There is little to no accountability and authority is maintained often through coercion and force. In case of democratic regime, power is distributed across different branches of government with checks and balances. Leaders are elected by the people through free and fair elections, ensuring accountability to the electorate. ऑथोरिटेरियन रिजिम में पावर किसी एक के हाथ में और नहीं तो स्मॉल एलिट ग्रुप में हाथ में होता है, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी का चांसेस बहुत कम होता है, नहीं तो कभी अकाउंटेबल होता ही नहीं है ये जो ग्रुप है और द रूलर जो है. तो यहाँ पे अथॉरिटी मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. बट इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक रिजिम पावर क्या होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट का जो ब्रांचेस है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जिसके जरिए चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किया जाता है. और जो लीडर्स है वो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जिसके लिए जो लीडर्स है वो जो कॉमन पीपल है उसके प्रति अकाउंटेबल लीडर्स को होना पड़ता है. देन another difference is related to political participation. In authoritarian regimes, citizens have limited political participation. If elections occur, then they are often controlled. Political opposition is usually suppressed. While in democratic regimes, citizens are free to participate in political process like voting, expressing opinions, etc. If there is a multi-party system, opposition is a normal part of the political environment. ऑथोरिटेरियनिज्म में क्या होता है, सिटीजन्स को लिमिटेड राइट मिलता है कहाँ पे पार्टिसिपेट करने, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. और यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होता है उसको सप्रेस करके रखते हैं. बट डेमोक्रेटिक रिजिम्स पे सिटीजन्स को फ्री मिलता है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए. सिटीजन्स के पास क्या क्या पॉलिटिकल राइट है, लाइक वोटिंग, they can express their opinions etc. और मल्टी पार्टी सिस्टम होने से वहां पे ऑपोजिशन होना एक नॉर्मल पार्ट है. Then another difference is related to rule of law. In authoritarian regimes, the rule of law is often subordinate to the whims of the ruling elite. Laws can be arbitrary and there is minimal independence of the judiciary. Citizens have limited protections under the law. But in democratic regime, there is a strong emphasis on rule of law with an independent judiciary ensuring that laws are applied fairly. Everyone, including leaders, is subject to the law and legal institutions are designed to protect individual rights. So, ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में क्या होता है, ऑथोरिटेरियन रिजिम्स से रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉ क्या है, सबसे ऊपर है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है. कभी कभी ऐसा लॉज भी होता है जहां पे जुडिशियरी को मिनिमल इंडिपेंडेंस दिया जाता है और सिटीजन्स के जो राइट्स है वो सब भी प्रोटेक्शन करने के लिए मतलब मैकेनिज्म नहीं होता है. बट इन अ डेमोक्रेटिक रिजिम इसका ऑपोजिट है. यहाँ पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया जाता है और यहाँ पे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशियरी इंश्योर करता है कि जो लॉ है वो फेयरली अप्लाई हो रहा है और एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स इज सब्जेक्ट टू द लॉ. और इंडिविजुअल्स के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा लीगल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किया जाता है इन अ democratic regime. The next difference is related to the freedom of expression. In authoritarian regimes, freedom of speech, press, and assembly is usually respected. Media is often state controlled or heavily censored, and criticism of the government can lead to imprisonment or worse. Whereas in democratic regime, freedom of expression is protected by law. Citizens and media are free to criticize the government
protest and express dissent without fear of retribution, as long as they follow legal channels. ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में क्या होता है? ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में जो बोलने का जो अधिकार है वो यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड होता है, और मीडिया को स्टेट कंट्रोल करते, नहीं तो मीडिया का जो न्यूज है वो हेवीली सेंसर किया जाता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई बोलने से इम्प्रिजनमेंट और उससे भी खराब कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक रिजिम में जो सिटीजन का जो राइट है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, ये लॉ प्रोटेक्ट करते हैं, और मीडिया फ्रीली गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और लोग भी खुद का जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ साथ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं if they follow the legal channels. So another difference is related to human rights. In authoritarian regimes, human rights violations are more common as the regime prioritizes control over individuals' freedoms. Democracies typically prioritize human rights with mechanisms to address abuses through independent institutions, civil society, and internal pressure. Violations are more likely to be exposed and corrected. ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक कॉमन बात है और एक आम बात होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स फ्रीडम के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। बट इन केस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी मिलता है, और ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन होने से उसको करेक्ट करने के लिए या उसको एक्सपोज करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म्स है। Then another difference is related to economic control. In authoritarian regime, the economy may be tightly controlled by the state or oligarchs close to the regime. Economic decisions may favor the ruling elite, and corruption tends to be higher. Innovation and growth can be stifled due to lack of competition. In democracies, economic system often allows for a free market with regulations to ensure fairness. There is generally more transparency and accountability in economic policies, leading to potentially greater innovation and sustainable development. ऑथोरिटेरियनिज्म में क्या होता है? ऑथोरिटेरियनिज्म में जो इकोनॉमी होता है देश का, वो टाइटली कंट्रोल करते हैं जो रूलर है वो लोग। सो जब कोई इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं या जो कोई डिसीजन लेते हैं इन रिलेटेड टू इकोनॉमी, देन ये मतलब ज्यादा रूलिंग जो क्लास है उसके फेवर में ही होता है, और वहां पे करप्शन का जो टेंडेंसी वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इनोवेशन एंड ग्रोथ वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फ्री मार्केट अलाउ करता है, जहां पे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और ये इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन so another difference is related to stability and efficiency. Authoritarian regimes can appear stable because dissent is quickly suppressed and decision making is streamlined. However, this stability can be fragile and prone to peaceful or violent changes as seen in revolutions or coups. But democracies can be less efficient due to the need for consensus, debate and negotiation. However, they tend to be more resilient in the long term as power transitions are peaceful and institutional systems adapt to challenges. Authoritarian regimes में क्या होता है? जो डिसीजंस होते हैं वो जो रूलर है वो सप्रेस करके रखते हैं, और रूलर के हाथ में ही होता है। सो जब ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में क्या होता है? कुछ मतलब
चेंजेस आता है तो जो डेवलपमेंट हुआ है वो कोलैप्स हो सकता है सडनली, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जो ग्रोथ है वो क्या होता है, थोड़ा धीमा होता है, बिकॉज यहाँ पे लोगों का जो ओपिनियन है वो भी लेना पड़ता है। लेकिन जो ग्रोथ होता है वो रेजिलियंट होता है, वो स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर का ट्रांजिशन होता है, पावर का ट्रांजिशन सडनली नहीं होता, थ्रू रिवॉल्ट नहीं होता, पावर का ट्रांजिशन थ्रू पीसफुल मीन्स होता है, लाइक इलेक्शन। Then another difference is related to legitimacy. In authoritarian regimes, legitimacy is often based on coercion, propaganda, nationalism, or control of information. Leaders may claim legitimacy through religion, ideology, or military strength rather than popular support. But in democratic regimes, legitimacy is derived from the consent of the governed. Regular, free and fair elections provide a mechanism for citizens to choose their leaders, ensuring that power is seen as legitimate. ऑथोरिटेरियन रेजिम में क्या होता है? ऑथोरिटेरियन रेजिम में जो रूलर है वो लेजिटिमेसी क्लेम करता है पॉपुलर सपोर्ट के थ्रू ही, उन लोगों का जो रिलीजन, आइडियोलॉजी और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बेस करके। बट डेमोक्रेसी में रूलर को लेजिटिमेसी मिलता है पॉपुलर सपोर्ट से, क्योंकि जो रूलर है वो क्या होता है, बेसिकली द पीपल देमसेल्व्स और द representatives of the common people. So, another difference between these two regimes is related to international relations. Authoritarian regimes have more aggressive foreign policies. They might form alliances with other authoritarian states, but face isolation or sanction from the democratic nations. Democracies tend to foster diplomatic relationships, build alliances, and participate in international organizations. They prioritize diplomacy and are more likely to support international laws and norms. यहाँ पे क्या है, ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो लोग अलायंस फॉर्म करते हैं दूसरा जो ऑथोरिटेरियन स्टेट्स है उन लोगों के साथ, और जो डेमोक्रेटिक नेशंस है उन लोगों से खुद को आइसोलेट करके रखते हैं। एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं वो लोग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, अलायंस ये सब बिल्ड करने में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स को सपोर्ट भी करते हैं। सो these are all about the differences between these two regimes. So if you have any query or doubt, write in the comment section. I will try to clear your doubts in the next video, which will be on again comparing regimes. Thank you. So जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, प्लीज share my channel with your friends and tell them to subscribe. Thank you.